નમસ્કાર, ધ બરોડિયનમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે વાત કરીએ કોંગ્રેસની, કારણ કે આજે ગુજરાતમાં કદાચ 30 વર્ષ પછી એવું બન્યું છે કે થોડી ઘણી રહી ગયેલી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓમાં ફરીથી પ્રાણ ફૂંકાયા છે. અને એનું કારણ કે એનો શ્રેય બજરંગ દળ, વીએચપી તથા અન્ય તત્વોને જાય છે કે જેમણે કોંગ્રેસની ઓફિસમાં તોડફોડ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. અને તેને કારણે રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં મેદાને ઉતર્યા. જી હા, આજે રાહુલ ગાંધીએ અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓનું એક જંગી સંબોધન કર્યું છે, જેમાં સૂતરની જે હાર છે, સૂતરનો જે હાર છે, એના સિવાય ભગવાન શિવની મૂર્તિ પણ આપવામાં આવે છે. અને આ જે મૂર્તિ આપવામાં આવી છે એ જ બતાવે છે કે હવે કોંગ્રેસ પણ ભાજપની સામે લડી લેવા માટે હર હર મહાદેવ કરવા તૈયાર થઈ ગઈ છે. વર્ષો સુધી છેલ્લા 10 વર્ષમાં ક્યારેય વીએચપી કે બજરંગ દળનું નામ સુદ્ધા સાંભળવામાં નહોતું આવ્યું. એ અચાનક ફરી પાછી બેઠી થઈ ગઈ અને તોડફોડ શરૂ કરી દીધી. ત્યારે જાણે સૂતેલા સિંહને જગાડવો અઘરો છે ને, તેવી રીતે ભાજપે અજાણતા સૂતેલા સિંહને જગાડી દીધો. અને સિંહ એટલા માટે કારણ કે અત્યારે ગુજરાતની ધૂરી શક્તિસિંહ પાસે છે. શક્તિસિંહ ને જગાડી દેતાની સાથે જ અને બીજી તરફ રાહુલ ગાંધી જે રીતે હાલ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વિરોધ કરી રહ્યા છે ને તેમને બહુ મોટા પ્રમાણમાં સમર્થન પણ મળી રહ્યું છે લોકો પાસેથી, ભારતની જનતા પાસેથી. તેવી હાલતમાં આજે રાહુલ ગાંધી આવ્યા અમદાવાદ ખાતે. અમદાવાદની મુલાકાત એ પણ રથયાત્રાના એક દિવસ અગાઉ લીધી છે. અને અમદાવાદમાં આવીને તેમણે લલકાર્યા છે મોદીને અને ભાજપની સત્તાને કે 30 વર્ષથી તમે રાજ કરો છો, હવે અમે તમને હરાવી દઈશું. તેમણે એવું સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે ભાજપની સામે ડર્યા વગર જો લોકો અને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા ઊભા થઈ જશે તો ભાજપ હારી જશે. સતત ડરો મત, ડરાઓ મત, ડરો મત, ડરાઓ મત ની વાત કરતા રાહુલ ગાંધીએ પંજાને વરદ મુદ્રામાં પરિવર્તિત કરી, જેને આપણે અભય મુદ્રા પણ કહીએ છીએ. વરદ મુદ્રા એટલે વરદાન આપનારી મુદ્રા અને અભય મુદ્રા એટલે જે અભય આપનારી મુદ્રા. એટલે હવેથી પંજાને તમારે અભય મુદ્રા તરીકે ઓળખવો, વરદ મુદ્રા તરીકે ઓળખવો કે પંજા તરીકે ઓળખવો એ લોકોએ નક્કી કરવાનું છે. પણ રસ્તાથી લઈને સંસદ સુધી જે નેતાનો અવાજ બુલંદ થયો છે તેવા રાહુલ ગાંધી એક પરિપક્વ નેતા તરીકે 100% હવે બહાર આવીને ઉભરી આવ્યા છે. અને અત્યારથી કે જ્યારે વિધાનસભાના ચૂંટણીને હજી 2.5 થી 3 વર્ષ બાકી છે, 2027માં ચૂંટણી યોજાશે. માફ કરશો, 2027માં ચૂંટણી યોજાશે. ત્યારે જ્યારે 2027માં ચૂંટણી યોજાશે તેની તૈયારી અને તેના યુગલ આજથી મંડાણ થઈ ગયા છે. તો બીજી તરફ ભાજપની એક પ્રદેશ કક્ષાની બેઠક હાલ સારંગપુરમાં યોજાઈ રહી છે કે જ્યાં સાળંગપુર ધામમાં હનુમાનજી મહારાજને કમળનો શૃંગાર બતાવી ને ફરી એકવાર ભાજપના નેતાઓએ લોકોનો વિરોધ
વેઠવાનું નક્કી કરી લીધું છે. પરંતુ એક વાત નક્કી છે કે હાલ જે પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે તે ભાજપ માટે જરાય સારી નથી. ભાજપના સત્તાધીશો, ભાજપના કોર્પોરેટર, ભાજપના વિધાનસભાના ધારાસભ્યો અને તાજેતરમાં ચૂંટાયેલા સાંસદ સભ્યો જો લોકોની મુશ્કેલીઓ દૂર નહીં કરે, જો લોકોને સાંભળશે નહીં, જો એ જ એંટ અને અભિમાનમાં રહેશે તો આવનારી ચૂંટણીઓમાં ભાજપનું કમળ કદાચ ગુજરાતમાં 50% રહેશે, બાકી 50% કોંગ્રેસ લઈ જાય તેમાં બે મત દેખાતા નથી. કારણ કે કોંગ્રેસ હવે વ્યાકુળ થઈ ઉઠ્યું છે, એગ્રેસિવ થઈ ઉઠ્યું છે અને સલામ છે એ કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓને, ગુજરાતના કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓને કે જેઓ છેલ્લા 30 વર્ષથી પાર્ટીનો કોઈ પણ પ્રકારે જનાદેશ નથી મળતો પાર્ટીને, છતાં પણ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ 30 વર્ષથી એક યા બીજી રીતે, ઓછામાં વધારે એક યા બીજી રીતે પોતાનો અવાજ રજૂ કરતા રહે છે અને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને થોડી ઘણી જીવંત રાખી રહ્યા છે. પરંતુ આજના આ ઉદ્બોધન અને રાહુલ ગાંધીના અમદાવાદ આગમન પછી કદાચ એવું બને કે આવનારા સમયમાં કોંગ્રેસમાં જોડાવા ભાજપમાંથી નેતાઓની લાઈન લાગે તો નવાઈ નહીં. કારણ કે ઘણા બધા ટિકિટ વાંછુઓ હવે કોંગ્રેસમાં 100% આવશે અને પોતાની ટિકિટ મેળવવાના પ્રયત્નોમાં સક્રિય થઈ જશે. જેમાં કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં ગયેલા મોટાભાગના નેતાઓ ફરી એકવાર પાછા આવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. તો અધૂરામાં પૂરું કદાચ ભાજપના નેતાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાય તો પણ નવાઈ નથી. અને ત્રીજી વાત, કદાચ હવે લોકો પણ કોંગ્રેસ સાથે રહેશે. સાંભળો શું કહ્યું राहुल गांधी जी से मैं विनती करूंगा कि आइए और हमें संबोधित कीजिए. मुकुल वासनिक जी, शक्ति सिंह गोयल जी, अमित चावड़ा जी, दीपक बाबरिया जी, शैलेश परमार जी, जगदीश ठाकुर जी, सिद्धार्थ पटेल जी, अमी याग्निक जी, लालजी देसाई जी, हिम्मत सिंह पटेल जी, जिग्नेश मेवानी जी, इंद्र विजय जी, इमरान खेडावाला जी, ललित भाई, लाला भाई पटेल जी, मतलब हमारे सारे के सारे सीनियर नेता और हमारे प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर टाइगर, आप सबका यहां मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं. पार्लियामेंट हाउस में आपने देखा होगा कि अजीब सी बात है, बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी. सही बात. शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवाणी जी को रथ पे देखा था. कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी. इनकी शुरुआत वहां हुई. राइट, ठीक है. रथ यात्रा चली और पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने
राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। अब उसका नतीजा बताता हूं। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, ये हुआ क्या। और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है।
तो अगला स्टेप क्या है? अब इन्होंने क्या किया? अच्छा, अंदर की बात बताता हूं। अब यहां आया हूं, परिवार से बात हो रही, तो अंदर की इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे। आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए, आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। सच्चाई है। जैसे मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा, हमारा काम, ये जो लगा रखा है मैंने आज, ये जो चिन्ह लगा रखा है, इसको क्या कहते हैं? अभय मुद्रा कहते हैं। ये आपका चिन्ह है, इसको भूलो मत। आप आज वापस जाओगे, अलग अलग धर्म के लोग हो आप, हर धर्म में यह चिन्ह आपको दिखाई देगा। गुरु नानक जी की फोटो देखिए, महावीर की देखिए, बुद्धा की देखिए। इस्लाम में भी, जैसे मैंने पार्लियामेंट में कहा, दुआ मांगी जाती है, दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है। आप शिव जी की फोटो देखिए, उसमें आपको यह दिखाई देगा। और इसका मतलब है डरो मत, डराओ मत। और मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। आप देख रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, देखो 50% आप में से लोग, 50% आप क्या सोच सकते थे? मैं आपको पूछता हूं, आप क्या सोच सकते थे? चुनाव से पहले आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी? ना। आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा? मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा, सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे, वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है, आपको डरना नहीं है। बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी।